Okay. So shall we start or wait for some minute? Okay. So am I audible? Sir. Yes, sir. Okay. Okay. So I'm sharing the part that we discussed last time. So I think we have started with this angular measurement, and here we have this universal bevel protector that we have seen. It is useful to measure this. It consists of a vernier scale as well as the main scale, just like your vernier caliper, and you can measure any sort of angle over here, like acute angle or obtuse angle, etc. Look at this is the, I told you last time, there are, for example, 24 divisions in this particular case. Okay, 12 this side, 12 this side, and 1 unit indicate the, that is 5 minutes. So this is total 60. Okay. With the main scale, 0 is either side, that is, for example, say 0 to 20 or 0 to 12, this side, either way. So you can measure by using just like a vernier scale, you can measure the corresponding angle to a minute size. So look at, this is the way to measure, for example, say this angle for this particular workpiece, that is the acute angle. This is the angle for the workpiece which is inside. Okay? So you can measure it, this particular angle, with the help of this bevel protector. So we have already seen about this thing, why it is important, misalignment and all that thing. Okay. So the another version of this particular protector, that is the optical bevel protector. It is just like the similar to the previous one, only some eyepiece which is provided over here for the purpose of say taking the reading directly. An optical protector is a simple extension of a universal bevel protector. The lens in the form of an eye is provided to facilitate easy reading for the protector scale. The blade is clamped to the dial by means of a blade clamp. It is given over here. So this is a blade over here. A blade clamp is over here. Which is given over here. And this is the eyepiece, which is given over here, like this particular one. So if this instrument is available with the lab, when the lab is open, we'll see how to measure that angle. The blade is clamped to the dial by means of blade clamp. It enables fitting of a blade of different length depending upon the work part being measured. In a protector without verniers, the dial scale reading can directly be read through the eyepiece. So there is no need to have, for example, this vernier scale. You can read this reading directly with the help of this eyepiece. Vernier protectors, in vernier protector, the eyepiece is attached on the top of vernier scale itself, which together moves as a single unit or a stationary dial scale. The eyepiece provides magnified view of reading for the convenience of the user. So this is the another version for this bevel protector. So another simplest method to measure the angle, that is called as a sine bar and sine center. And this sine bar, which indicate this uses the principle of this, say for example, sine. So look at the bar. Usually, this particular bar, which is made of say metallic material, say steel basically, and these are the rulers at the end of the bar. And look at the different elements of this bar, which are given over here. So this, for example, is a relief hole, okay, so that you can reduce the weight of this particular bar. This is the end face over here. End face over here. This is the topmost surface. This is the datum line basically, where these two rollers that comes in a contact with the surface. So this can be this sine bar can be used with the is to be used with the help of say in combination with the slip gauges to measure the angle. So look at how we are going to use it. Sine bars are made of say corrosion resistant steel and are hardened, ground and stabilized.
The size is specified by the distance between the center of the cylinder. So this is the cylinder basically. Center of the cylinder, which indicate the basic dimension for this specification of a sine bar. So which is approximately say 100, 200 or 300 mm. Upper surface has a high degree of flatness. So we'll discuss about this, what is flatness, straightness, and how to measure that particular this geometric parameter as far as the surface is concerned. But you can just understand the upper surface has a degree of flatness of up to 0.001 mm for a 100 mm length, and is perfectly parallel to the axis joining the center of two that particular cylinder. So look at this one. So this is for example a top surface. This for example a top surface. This for example a top surface. Top surface, and there is a center to center distance basically. Reduce the weight of that particular bar. Now, how to use it? So look at, you can use simple say sine rule you have to apply. The accessories such as surface plate, slip gauges are needed to perform the measurement. So we already said about the surface plate or the V block which act as a datum line or the datum surface basically. And we have to use this sine bar in combination with the slip gauges and that particular surface plate. So you can say this is the surface plate which acts as a datum line. This is the stack of, for example, this slip gauges of different, for example, say this thickness over here, and in combination that will give the corresponding height. For example, this particular edge. So suppose if you want to measure any angle, like this angle, for example, some angle, like okay. So you want to measure this particular angle, like this particular. If you want to measure this angle, naturally you have to put that sine bar on this the corresponding say, surface over here. You may have the object. So now this is the height of the slip gauges. Now after having the requisite height, you can remove this particular, for example, slip gauges with the original object, which is to be for which the angle is to be measured. For example, okay. So this is the angle, for example, theta over here, and we have to use simply the sine rule, that is h is equal to L sine of theta, and that will give you, for example, this particular angle, that is the sine angle. So look at the maximum angle that can be set using, either you can set the angle, either you can measure the angle using the sine bar, that is up to 45 degree. The higher angle, at higher angle, error due to the distance between the center of the ruler and the gauge block gets magnified. So if you go beyond this 45 degree, the error, whatever the error is there, that is magnified. So usually it is restricted to use up to 45 degree. This is the primary reason why the metallurgists avoid using sine bar for the for angle greater than 45 degree. So there is a table for that particular one, how the error that is magnified. I will show you this table later on. So look at the measuring the unknown angle with the sine bar. Suppose if you want to measure the angle for this particular surface, इसका angle measure करना आपको, for example इस surface का, like this angle for example, okay. So you can simply have this surface, you can put that object on the surface of this sine bar, and obviously you have to use a dial indicator for that purpose. So you have to have the surface plate, you have to have, for example, slip gauges, and the uppermost line, this line and the datum line, that should be perfectly flat. Okay, it should be. You should arrange the things in such a way that, and you have to put the sine bar below that. You have, for example, slip gauges over here, and this is the workpiece, and this, for example, a dial indicator. We will discuss about the dial indicator. Dial indicator is used to know about, for example, say its straightness or flatness, basically with respect to this particular line. You can just consider the parallelness of this surface with respect to this line, that is to be measured with the help of this dial indicator. So
So you can find out any angle, the unknown angle for any workpiece that is to be put on the surface of this sine bar, basically by using this particular method. Guidelines should be followed to use the sine bar for angle measurement. It is not recommended to use the sine bar for greater angle than 45 degree, because any error in the sine bar or height of the slip edges get accentuated. Sine bar provides the most reliable measurement for the angle less than 15 degree. So look at this, for a smaller angle, that this particular sine bar is usually preferred. Longer the sine bar, better the measurement accuracy. It is preferable to use the sine bar at a temperature recommended by the supplier. The accuracy of measurement is influenced by the ambient temperature. So this is the important aspect, ambient temperature, that plays an important role. It is recommended to climb the sine bar and the workpiece against the angle plate. This prevents the misalignment of the workpiece with the sine bar or bar while making measurement. One should always keep in mind that the sine principle can be put to use provided the sine bar is used along with the high quality surface plate and the set of slip gauges. So high quality surface plate and slip gauges that plays an important role to measure the angle accurately. So this is another version of the sine bar. For example, sine bar, if you have the corresponding width over here, if you extend it, suppose usually the sine bar is having a limited, for example, this particular width. If you extend like this particular one, you can just call this as a sine block. Okay, if you measure, if you use along with the, another attachment at the base, for example, it will become a sine plate, or it is also called as a sine center basically. To look at is the sine bar, or is also called a sine center. Whenever you want to measure, for example, the taper of any conical workpiece, that can be mounted on the sine center. So why it is called sine center? Because we are having additional, for example, features on the surface of this particular block, or you can use the additional feature on the surface of the sine bar, so that you can accommodate any component having the conical kind of, say, for example, features over here, so that you can measure the corresponding angle over here. Sine block is a bar that is wide enough to stand unsupported, as shown in the figure. If it rests on an integral base, it become a sine plate. तो यहाँ जो दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल, अगर इसमें ये तो यहाँ बेस नहीं है, लेकिन यहाँ अगर अलग से आप बेस प्रोवाइड करते हो, like this particular one, integral base, then it will become a sine plate. There is simple difference. A sine plate is wider than the sine block. A heavy duty sine plate is rough enough to hold work part for machining or inspection of the angle. If a sine plate is an integral part, if a sine plate is an integral part of another device, for example, machine tool, it is called as a sine table. अब इसमें मान लो machine tool में ही आपने इसको attach कर दिया, it will become a sine table. So minor variation is there as far as the terms are concerned. However, there is no exact dividing line between these three. So ऐसा कोई dividing line नहीं, you can simply consider this as a sine bar for the purpose of measuring the angle. In all these devices, work part rests on the then they are often used like a fixture to keep the work part at a particular orientation, so that the required angle is machined. On milling machine, or on, for example, grinding, or on, for example, shaping machine, you can make use of this sort of, say, sine bar as a fixture itself, so that you can accommodate the part that is to be machined with a particular angle. So fixture is nothing but the holding device for a workpiece basically. So it is, you can just say it is customized, okay, according to the shape and size of that particular, say, your workpiece. So instruments have the attachment to raise and lock the block to required angle, and to also fasten the work part. The sine table is most struck device which may be swung to any angle between 0 to 90 degree by pivoting about the hinge end. So sine table, you can also have the, for example, the twisting, or you can say you can set the sine table at a particular angle in the range of, say, 0 to 90, wherever you require the sort of, say, machining, and which will act as a fixture.
Science center, as I told you, the science center provides the convenient means of measuring angle of a conical workpieces that are held between the center as shown in the figure. The previous figure आपने देखा है इसको ये वाला, okay. So one of the roller is pivoted about its axis, thereby allowing the sign bar to set to an angle by lifting the another roller. The base of the sign center has a high degree of flatness. Slip gauges are rung and pressed on it to set the sign bar at the required angle. Conical workpieces that need to be inspected are placed between the center. The sign center is used for measuring angle up to 60 degrees degree. So up to 60 degree you can make use of the sign center for measuring the angle for the conical surface or conical object. Angle gauge is another this for example instrument, or you can say the gauge that we're using for the purpose of measuring the angle, that is the angle gauges. I think these angle gauges are available in the lab, and again it is a part of the lab. Whenever the lab is physically open, we can make use of these angle gauges for the purpose of measuring the known unknown angle. Angle, it is just like a slip gauges. Okay. So just like a slip gauges, these are the slip gauges are rectangular or square in nature, and flat surfaces there of certain thickness, zero point 0.5, 1.5, a different grade that we already seen about that particular one. Fine angles are also the high grade. These are also the, for example, block which is made of say this particular steel, high grade resistance steel, work on the principle similar to the slip gauges. While slip gauges can build to give the linear dimension, the angle gauges can build to give the required angle. So it is for the purpose of measuring the angle. The gauge comes in a standard set of angle block that can be run together in a suitable combination to build the particular angle. Angle blocks are the special feature that is impossible in slip gauges. The former can be subtracted or added. So this is the important aspect. In a slip gauge, it is not possible to add or subtract, for example, particular thing to get the required, for example, thickness. But this can be possible in case of the angle gauges. So look at, जैसे मान लो आपने आपको ये नीचे वाला है आपका विच इज नथिंग बट एंगल ब्लॉक, और उसका मान लो एंगल आपका 30 है, तो ऊपर में एक ब्लॉक आपका और है विच इज नथिंग बट हैविंग द एंगल ऑफ फॉर एग्जांपल से 5 डिग्री. ओके, मतलब ये जो एंगल मिलेगा आपको इसमें इसमें इसका, और ये आपका हो गया मान लो 30, ये 35 हो जाएगा. लेकिन इसका उल्टा अगर पुटअप करोगे आप इस साइड में, मतलब यहाँ मान लो 30 है आपका, ठीक है ना, यहाँ आप पुटअप करोगे उल्टे डायरेक्शन में, इट इज जस्ट लाइक अ टैपर सरफेस बेसिकली. So you can have, for example, the addition and subtraction of this particular angle block, and you can get the requisite angle. तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 35, यहाँ कितना हो जाएगा 30 minus 5, so it is for example say 25 basically. So this is the additional feature or important feature of this particular angle gauges, so that you can add the angle, you can subtract the angle by choosing the appropriate angle block to measure the corresponding angle over here. Angle gauges are made of hardened steel which is lapped and polished to a high degree of accuracy and flatness. So I told you lapping is nothing but you have the surface, particularly a piece of paper cloth is there with emery this particular particles, or you can say the sand particle, you can say, or the abrasive particle of micro size. And we are just, for example, say carrying out the polishing operation by this particular piece of say cloth. So the operation is called as a lapping operation. You can carry out it manually also. You can carry out, for example, say with the help of machine also. So gauges are about 75 mm long, 15 mm wide, and the two surfaces that generate the angle are accurate up to plus minus to this particular second, you can say. ठीक है, डबल डैश है इसका मतलब सेकंड है, सिंगल होगा तो मिनट्स में आ जाएगा. The gauges are available in a set of say 6, 11 or 16. The table below provides the details of individual block in this set. So look at over here. ये इसमें ठीक है ना. This is, for example, angle gauge block set. Smallest increment by which an angle can be produced 1 degree. This is, for example, say 1 minute. This is, for example, say 1 second. You can say this is the number of individual block containing the set 6, 11, and 16. Look at this block. Say 1, 3, 5, 15,
30 and 45. 6 blocks 1 3 5 15 30 45. 5 blocks, this is 1 3 5 20 and 30. 6 blocks. So these are, for example, the details about this angle gauges which are available. So look at how we are going to measure the angle in this particular case. Okay. तो इस फॉर एग्जांपल 45 डिग्री, अब यहाँ देखो इसमें क्या क्या किया है, ये एंगल आपको मेजर करना है इस पर्टिकुलर केस में 45। अब ये एंगल कितना है, ये उल्टा है, मतलब ये शो करता है एडिशन। अगर ये सारे साइन इस तरह से मान लो तो एडिशन हो जाएगा ये, ठीक है। और ये उल्टा साइन है इसका मतलब सब्सट्रैक्शन। सो 45 माइनस 3 दिस पर्टिकुलर वन दैट इज 3, मतलब 42 हो जाएगा, प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा 35 मिनट्स एंड 20 फॉर एग्जांपल सेकंड। तो ये एंगल आपका कॉम्बिनेशन इस तरह से आ जाएगा। यू कैन मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल्स गेजेस ब्लॉक फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग द एंगल। From the calibration point of view, it is much easier to calibrate the angle blocks compared to slip gauges. This is due to the fact that the angle being measured is a portion of a full circle and is therefore self-proving. तो यहाँ आपको मतलब summation सारा आपका 360 डिग्री हो जाएगा, तो you can easily find out the corresponding angle, or you can exactly, you can say correctly. In addition, the accuracy of slip gauges is not as sensitive as angle gauges is not as sensitive to temperature changes as that of slip gauges. So there is no much effect on the angle gauges. Angle gauges are used for measurement and the calibration purpose in the tool room. It can be used for measuring the angle of die insert or for inspecting the compound angle of a tool and the die. They are also used for the machine shop for either setting up the machine, the revolving center of a magnetic chuck, or grinding notches on the cylindrical grinding machine. तो जहाँ भी आपको ये सेट एंगल सेट करना, you can make use of this particular say angle gauges. Look at here the compound measurement of this particular angle. यहाँ दो एंगल है, मतलब look at this surface over here. इधर वाला एंगल जो है आपका ये बीटा है, मान लो इधर वाला एंगल जो है आपका फॉर एग्जांपल से अल्फा है in this particular case. तो पहले आपको क्या करना है, you have to put this you have to make this particular thing a parallel. That means this line, ये जो लाइन होगी आपकी ये वाली, पहले इसको इस बेस से पैरेलल करना है, ये वाला जो बेस है ना, तो इसके नीचे अकॉर्डिंगली यू कैन इंसर्ट द एंगल गेज दिस पर्टिकुलर गेजेस ओवर हियर। तो ये सरफेस, ये लाइन और ये लाइन एक तरह से पैरेलल हो जाएगी। जैसे पैरेलल हो गया उसके ऊपर हमने क्या करना है, ये दूसरा एक ब्लॉक जो होगा एंगल गेज का वो पुट अप कर देंगे इसमें, सो दैट दिस लाइन, ये जो लाइन है आपकी ये वाली और ये वाली, ये पैरेलल हो जाए। और ये आपका मान लो एक तरह से टैपर्ड सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस होगा। यहाँ हम अगेन डायल इंडिकेटर यूज करेंगे, तो डायल इंडिकेटर में ये पॉइंट और ये पॉइंट का अगर रीडिंग लेंगे मान लो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ डायल इंडिकेटर आपने 0 पे अगर सेट किया है तो ये इट शुड गिव द फॉर एग्जांपल रीडिंग दैट इज 0 ओवर हियर। इसका मतलब है यू कैन मेजर द एंगल साइमल्टेनियसली। आप मतलब इसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल मेजरिंग, मतलब अल्फा भी आपने मेजर कर लिया, बीटा भी मेजर कर लिया, अकॉर्डिंगली यू हैव सेट दैट पर्टिकुलर ब्लॉक फॉर द मशीनिंग पर्पस। तो ये एज ए फ्लैट सरफेस वो मशीन हो जाएगा, लेकिन जब इसको आप प्रैक्टिकली यूज करेंगे इट विल नथिंग बट द कंपाउंड एंगल दैट इज अल्फा एंड दिस पर्टिकुलर बीटा ओवर हियर। Got it? मेरी बात समझ रहे हो ना, किस तरह से करना है इसको? Yes, sir. ये जब हम लोग करेंगे ना, ये एक्चुअली सारा प्रैक्टिकल वर्क होता है, ये लैब में जब करेंगे तो पता लगेगा। तो अभी तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है। तो we have, that's why the lab is important. We have to use all these instruments for the purpose of measuring this angle, setting the angle, slip gauges, angle block, etc. कैलिब्रेशन, अब इसमें कैलिब्रेशन मेथड जो होता है इसमें इंटरफेरोमेट्री हम लोग यूज करते हैं, डिस्कस अबाउट इंटरफेरोमेट्री, बट अभी इतना ध्यान रखो कि वी आर यूजिंग फॉर एग्जांपल से इंटरफेरोमेट्री फॉर द पर्पस ऑफ दिस कैलिब्रेशन। तो यहाँ पैटर्न बनते हैं अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन फॉर एग्जांपल द एंगल इज the calibration. The newly manufactured or in use angle gauges are subjected to calibration to ensure the accuracy. One of the popular calibration method for angle gauges is interferometry method, which is quite a simple and accurate way of calibrating the angle. तो यहाँ ये फ्रिंज पैटर्न बनता है इसमें बेसिकली। लुक एट दिस वन, एंगल अल्फा, ये थीटा 1 थीटा 2 फॉर एग्जांपल। तो यहाँ क्या होता है कि यू विल हैव फॉर एग्जांपल, और ये एंगल आपका है फॉर एग्जांपल, जैसे इसको मेजर
ठीक है ना। यहाँ फ्रिंज पैटर्न बनता है और पैटर्न का सिग्निफिकेंस होता है। जब हम इंटरफेरोमेट्री शायद यूनिट नंबर 3 में मेरे ख्याल से जब पढ़ेंगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न उसमें बनते हैं। तो ये यूज करके वी आर फॉर एग्जांपल कैलिब्रेटिंग दिस पर्टिकुलर एंगल गेजेस। तो वो इंटरफेरोमेट्री में इसको इन डिटेल डिस्कस कर लेंगे। दूसरा होता है true square. It is just like you can say the metallic block basically as shown in the figure. The true square is used as a companion tool along with the angle gauge. मतलब angle gauges को set अगर करना है मान लो तो you can make use of for example this true square. जैसे आपका tri square होता है. It is available for the both tool room and laboratory master set. As the name itself suggests, it is a square piece made of say hardened and wear resistant steel. All faces of the true square are precisely at 90-degree angle to adjust the gauging surfaces. It is a high degree of optical flatness and parallelism to be used with autocollimeter. The main advantage of true square is that it extends the range of angle block set to 360 degree and be it in degree, minutes or second. So this is the important advantage as far as this particular true square is concerned. इसके बाद आता है स्पिरिट लेवल। ये शायद सबने देखा होगा क्योंकि घर में कई बार वो मिस्त्री काम करने के लिए आता है फ्लोरिंग का तो या जहां भी होता है तो दिस टाइप पीपल यूजुअली यूज दिस स्पिरिट लेवल। तो स्पिरिट concept of the spirit level is very simple. That is used for the purpose of measuring the angle also, flatness also, straightness also. But for that purpose, you have to divide the surface into a grid basically by using the horizontal and vertical line and put this particular spirit level at the particular node. तो जहां नोड पे रखोगे तो वहां वो जो आपका जो यहाँ जो होता है ना मतलब यहाँ बबल आता है बेसिकली आपने देखा होगा। तो बबल वो शिफ्ट होता है या तो इधर शिफ्ट हो जाएगा या इधर शिफ्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंगली वी फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ऐसे सारे एंगल अगर आपको मिल जाते हैं तो यू कैन आल्सो कैलकुलेट दिस फ्लैटनेस एंड द स्ट्रेटनेस। सो दिस इज स्पिरिट लेवल, इट्स वेरी कॉमन। यहाँ एक कर्विकल ट्यूब होती है, ट्यूब विच कंसिस्ट ऑफ फॉर एग्जांपल अ स्पिरिट। वो क्या था कि जो यूरोपियन कंट्रीज में क्या है कि बेसिकली इसमें वाटर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बट यूरोपियन इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ विंटर में ये फ्रीज हो जाता है। तो वो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर थिंग इन लोगों ने क्या कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट पर्टिकुलर वाटर दे आर सिंपली यूज द स्पिरिट। सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज ए स्पिरिट लेवल। अच्छा ये इसमें एल गायब हो गया मेरे ख्याल से, मैं इसको बाद में कर दूंगा, ठीक है। ये स्पिरिट लेवल है। तो ये रेफरेंस आपका बेस होगा इसमें। ये मान लो क्रॉस टेस्ट लेवल है, ये ग्रेजुएटेड वायल है जिसके जहां बीच में आपका बबल होगा बेसिकली। ये एडजस्ट स्क्रू एडजस्टमेंट है, ये आपका टॉप प्लेट है बेसिकली। तो लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका है ये वाला ठीक है ना, एंड द बबल स्केल। ये एंगल आपका थीटा है और ये आपका 1 mm मान के चलो इस पर्टिकुलर केस में। सो व्हाट हैपेंड? A spirit level is a basic bubble instrument which is widely used in engineering metrology. It is derived from the practice in the cold western countries to combat tube freezing. The tubes were filled with the spirit of wine. Hence the term spirit level. The spirit level, as you are aware, is an angular measuring device in which the bubble always moves to highest point of a glass vial. तो ग्लास वायल होता है जैसे आपके वो इसके वायल आता है ना, जैसे वो इंजेक्शन के या किसी जैसे इंटेरोजेरमिना करके एक बैक्टीरियल फ्लोरा आता है, उसके वायल्स आते हैं अलग अलग। इट इज जस्ट लाइक दैट। उसमें मान लो वायल है, उसमें उसके अंदर बबल है। द डिटेल्स ऑफ टिपिकल स्पिरिट लेवल आर शोन इन द फिगर। ये मैंने आपको दिखाई दिया है, ठीक है। द सेंसिटिविटी ऑफ स्पिरिट लेवल डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बबल एंड द ट्यूब बेसलाइन। Sensitivity can be increased either increasing the radius of curvature or reducing the base length. जो base length आपकी जैसे ये base length है फॉर एग्जांपल, ये base length हो गया, एक मिनट आ गया, ये base length है आपकी और ये आपका radius of curvature है। तो इस पे डिपेंड करते हैं इसके सेंसिटिविटी, ठीक है। So the most useful sensitivity for precision measurement is 10 seconds per division. The main use of spirit level is not for measuring angle but measuring the alignment of the machine part and determine the flatness and the straightness. तो यहाँ इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा जैसे फ्लोरिंग हम लोग घर में करते हैं, मान लो जो मिस्त्री आता है उसमें भी मेन ऑब्जेक्टिव एंगल मेजर करना नहीं होता है। आपका पर्पस क्या होता है? वी वांट टू मेजर द फ्लैटनेस एंड द स्ट्रेटनेस।
जिसको वाटर लेवल भी बोलते हैं इन जनरल, जो मिस्त्री लोग काम करते हैं. So in order to minimize this error, the following procedure is recommended while using the spirit level for precision measurement. Take reading from both ends of the wire. दोनों तरफ से मतलब उसको एक बार सीधा रखो जैसे इसमें है ना, एक बार इसको ऐसे रखो जैसा अभी रखा हुआ है, एक बार उसको पलटी मार दो ऐसे. ठीक है, ये सर एंड आपके इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा. तो इस तरह से करना होता है इसमें. Reverse the base of the spirit level. Repeat the reading from both end. Average the 4 reading. Repeat all steps for the critical cases. तो ये आपको मल्टीपल रीडिंग चाहिए. मैंने शायद पहले ही बताया था, कम से कम 4 या 5 रीडिंग आपकी होनी चाहिए. एंड देन यू यूज टू कैलकुलेट फॉर एग्जांपल से दैट पर्टिकुलर एवरेज वैल्यू. सो इसी का एक्सटेंशन है, मान लो क्लिनोमीटर होता है. क्लिनोमीटर इज स्पेशल केस ऑफ स्पिरिट लेवल. व्हाइल द स्पिरिट लेवल इज रेस्ट्रिक्टेड टू relatively small angle, clinometer can be used for much larger angle. It comprises a level mounted on the frame so that the frame may be turned to an desired angle with respect to the horizontal reference. मैं इसका फिगर दिखा देता हूँ. ये इस तरह से होता है. यहाँ ये स्पिरिट लेवल है, ठीक है. इस लॉक में फॉर एग्जांपल ये लिखा है यहाँ स्पिरिट लेवल है, ठीक है. ये स्पिरिट लेवल है, ये स्पिरिट लेवल है. ये एंगल स्केल है, ये जो दिख रहा है ना एंगल स्केल है. ये एडजस्टमेंट करने के लिए स्क्रू दिया हुआ है और ये आई पीस है, यहाँ से आपको देखना है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना. ये बेस है इसका. तो ये अगर लार्जर एंगल आपको मेजर करने हैं, मान लो जैसे कोई सरफेस होगा इस तरह से इंक्लाइंड है, एंगल लार्जर है फॉर एग्जांपल, तो in that particular case you can make use of this particular say clinometer. This is nothing but the extension of that particular spirit level. So it comprises level mounted on the frame so that the frame may be turned to any desired angle with respect to horizontal reference. Clinometers are used to determine the straightness and the flatness of surface. They are also used for setting the inclined table on the jig boring machine and angular job on surface grinding machine. तो जब वर्कशॉप में जाओगे तो वहाँ सरफेस ग्राइंडर पड़ा हुआ है, वहाँ अगर एंगुलर सरफेस आपको चाहिए तो उसको सेट करने के लिए यू कैन मेक यूज ऑफ दिस क्लिनोमीटर. दे प्रोवाइड सुपीरियर एक्यूरेसी कंपेयर्ड टू द ऑर्डिनरी स्पिरिट लेवल. तो नेचुरली स्पिरिट लेवल इसमें थोड़ा सा फर्क है. तो यू कैन हैव फॉर एग्जांपल द क्लिनोमीटर फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग द लार्जर एंगल. ये इसका फिगर हो गया. Optical instrument for angular measurement. Apart from this one, there are different optical instruments that we use it for the purpose of measuring the angle. In the modern day, optics have applications in the metrology. There are 4 principles that govern the use of optics in metrology. The most vital one is magnification, which provides visual enlargement of object. Magnification enables easy and accurate measurement of attribute of the object. तो ये मैग्निफिकेशन ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो वो जैसे आपको एंगल मेजर करना है तो यू कैन हैव द हायर मैग्निफिकेशन बाय यूजिंग दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड यू कैन मेजर द एंगल एक्यूरेटली. द सेकंड वन इज एक्यूरेसी. द मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स प्रोवाइड द एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, देयरफॉर एंश्योर द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. तो एक्यूरेसी, मैग्निफिकेशन. The third principle is of alignment. It uses the light ray to establish reference as the lines and the planes. तो इसमें alignment इसका perfect होता है as they are using the planes and the lines as a reference for the purpose of measurement. So that is significant one. Is the principle of interferometry, which is the unique phenomena associated with the light. So interferometry we are using that is the phenomena which is associated with the light. That is the you can say that generate the pattern basically. So वो हम बाद में देखेंगे. The most popular angle measuring instrument based on the optics is the autocollimator and angle decor. An autocollimator is an optical instrument that is used to measure all small angles with a very high sensitivity. It has wide variety of application including the precision alignment, detection of angular moment, verification of angle standard, etc. The user has a wide choice of instrument from the conventional visual collimator to the digital or the laser collimator. Collimator where here we are using the concept of say parallel lens basically. है ना, इसमें मतलब collimating lens होती है, parallel lens होती है. Angle decor is a particular type of autocollimator that is essentially used as a comparator. Although it is not as precise an instrument as an autocollimator, it has a wide field of application for general angle measurement.
as angular variations are directly read out with the operation of a micrometer. Autocollimator, जैसे मैंने बताया आपको, autocollimator is a special form of telescope that is used. Like you can just consider it is just like a telescope used to measure the small angle with a high degree of resolution. It projects a beam of collimated light onto a reflector which is deflected by a small angle about a vertical plane. The light reflected is magnified and focused on the eyepiece or a photodetector. The deflection between the beam and the reflected beam is a measure of angular tilt of reflector. The figure illustrates the principle of working of this particular autocollimator. जैसे ये मान लो आपका लाइट सोर्स है, ठीक है ना, यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, ये ऑब्जेक्टिंग लेंस है, ये क्रॉस या फॉर एग्जांपल रेटिकल है जैसे होता है ना, लाइक दिस पर्टिकुलर, इसमें से आपको देखना है, ठीक है ना। एंड इज फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्टर, तो जैसे मान लो ये आपने पुटअप किया, ये सरफेस है मान लो, यहाँ कोई आपके जो सरफेस है वो इंक्लाइंड है फॉर एग्जांपल लाइक दिस पर्टिकुलर, तो ये एंगल आपको मेजर करके दे देगा। एंड प्लेन ये जो लुक एट फॉर एग्जांपल वेरिएशन हुआ गया, तो ये आपके पास इंसिडेंट बीम यहाँ होगा और ये दूसरा वाला आपका हो गया रिफ्लेक्टेड बीम. So that gives you, for example, a small angle, and this is nothing but the autocollimator that we are using. तो इसका another एक version है. So look at this one. ये उसका figure है. जैसे optical square है, for example, collimating lens है. Then this is a focal distance जो भी होगा, ठीक है. eyepiece है यहाँ. Micrometer can use it for the purpose of adjustment. Light source है. And look at जैसे ये surface आपको measure करना है, for example, ठीक है ना. स्मॉल एंगल, तो ये आपका यहाँ से मेजर हो जाएगा, ठीक है. दैट इज द ऑटोकॉलिमेटर. Rectal is an illuminated target with a cross-hair pattern which is positioned in the focal plane of objective lens. The plane mirror perpendicular to optical axis serve as a purpose of reflecting an image of a pattern back onto the observation point. The ring system is required to observe the relative position of the image of a cross wire. This is done in most of the autocollimator by means of a simple eyepiece. यहाँ दिया है ना simple eyepiece. Look at this one. यहाँ से देखेंगे हम लोग, ठीक है. If the rotation of the plane reflector, if the rotation of the plane reflector by an angle, for example, this particular say angle theta होगा, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा गड़बड़ है. The resultant displacement of image by an amount d, then d is for example 2f and that particular theta. So f आपकी focal length है इसमें और theta जो है आपका वो angle है. Autocollimator में भी classified into three types. The visual autocollimator होते हैं, digital है, laser है. Visual autocollimator, in this type of autocollimator the displacement of the reflected image is determined visually. A pinhole light source is used whose reflected image is observed by the operator through an eyepiece. Visual collimators are typically focused at infinity, making them useful for both the short and the long distance measurement. Plane reflector is one of the vital part of an autocollimator because the mirror that is not flat will defocus the return image, resulting into, for example, a poor definition of an image. High quality mirror with a flatness tolerance of say 1 micron per 100 mm are used. Most visual collimators have the resolution of say 3 to 5 minutes over a distance of say 1.5 meter. So second, sorry, minute ne second है, double the dash है. The following are some of the typical application of say visual autocollimator. Determination of angle measurement up to 3 seconds. Determination of straightness of the machine guide ways. तो आपने लेफ्ट मशीन में आपने देखा होगा कि जिसमें वो कैरियज मूव होता है या जिसमें वो टेलस्टॉप मूव होता है, दैट इज नथिंग बट फॉर एग्जांपल कॉल्ड एज अ गाइडवेज और स्लाइडवेज. तो उसका मतलब आपको स्ट्रेटनेस चेक करना है, यू कैन मेक यूज ऑफ दिस विजुअल ऑटोकॉलिमेटर. डिटरमिनेशन ऑफ द पैरेललिज्म ऑफ अ स्लाइड मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू द गाइडवेज. जो स्लाइड मूवमेंट होती है उसका भी अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू गाइडवेज के हिसाब से देखना है आपको, whether it is moving parallelly or not, you can make use of this particular autocollimator. Flatness estimation of the machine table surface plates. The surface plate का भी flatness अगर आपको measure करना है, you can make use of this autocollimator. Verification of right angle prism of angular error, angle comparison of reflecting surfaces. इसके अलावा होता है डिजिटल ऑटोकॉलिमेटर. होता है डिजिटल ऑटोकॉलिमेटर uses an electronic photo detector
to detect the reflected light beams. Major advantage of this type of collimator is that it uses digital signal processing technology to detect and process the reflected beam. This enables the filtering out of stray scattered light, which sharpen the quality of image. So अगर image आपको quality of image आपको इसमें मतलब accuracy बढ़ानी है, for example, you can go for the digital autocollimator. This instrument has resolution up to 0.01 arc second and this linearity of say 0.1%. Since the output is digital in nature, it can be transferred to a data acquisition system, thereby facilitating storage and the further processing of data. तो आजकल हम data acquisition system use करते हैं. We have now the computers and different software also, so that data can be fit to the software to get the requisite angle. Another major advantage is that it can also measure the angle of dynamic system, which systems to a high degree of resolution thanks to high sampling rate of digital electronic system. जैसे मान लो एक शाफ्ट है, मान लो वो रिवॉल्व कर रहा है और वहां मान लो आपको उसका जो एक तरह से मतलब राउंडनेस समझ लीजिए उसको मेजर करना है. यू कैन मेक यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ से फॉर एग्जांपल द ऑटोकॉलिमेटर. तो वहां जो राउंड शेप होती है कॉन्सेंट्रिक या राउंड शेप आपको मेजर करनी है या एंगल मेजर करना है, हाउ दिस पर्टिकुलर एक्सिस इज डिफ्लेक्टिंग विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर लाइन. So you can make use of this particular, क्योंकि शाफ्ट रोटेट करेगा विद सर्टेन आरपीएम से 100 200 300. तो उस केस में you can make use of this kind of say autocollimator for the purpose. The following are the some of the applications of this digital autocollimator: measurement of a static as well as dynamic system, alignment and monitoring of robotic axis. जो आप रोबोटिक्स आप लोग पढ़ते हो वहां जो आपको अलाइनमेंट करना है, मूवमेंट आपको देखना है रोबोट का, तो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस ऑटोकॉलिमेटर फॉर दैट पर्पस. Variation of angle error of rotary table, indexing head, platform of machine part. Indexing head usually आपका जो मिलिंग मशीन होता है उसमें यूज होता है. There are different kind of indexing head. Indexing head की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आपको सिमिलर फॉर एग्जांपल मशीनिंग करनी है, सिमिलर शेप आपको जनरेट करना है. जैसे गियर टीथ होता है, तो गियर टीथ में अगर आप बार बार मान लो उसको और यूनिफॉर्म आपका उसका ये होना चाहिए क्या, दैट इज कॉल्ड एज फॉर एग्जांपल स्पेसिंग. तो अगर उसके लिए वी आर यूजिंग अ कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्सिंग हेड. तो आप मिलिंग मशीन के बारे में जब पढ़ोगे वर्कशॉप में तो वहाँ इंडेक्सिंग हेड है, कभी जाके देख लेना. तो उसका अगर आपको मतलब वेरिएशन अगर करना है एंगल का कि एग्जैक्टली वेदर यू आर गेटिंग द एग्जैक्ट एंगल और नॉट, यू कैन मेक यूज ऑफ द ऑटोकॉलिमेटर फॉर दैट पर्पस. रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ अलाइनमेंट ऑफ अ लार्ज मैकेनिकल सिस्टम. तो दूर से अगर आपको मान लो मॉनिटर करना है, यू कैन मेक यूज ऑफ दिस ऑटोकॉलिमेटर. Laser, इसमें laser another version is for example laser autocollimator. Laser autocollimators represent the future of precision angle measurement in the industry. Superior intensity of laser beam makes it ideal for measurement of angle for a small object 1 mm in diameter. मतलब एक ऑब्जेक्ट आपका 1 mm in diameter अगर है तो वहां you can make use of this kind of this particular thing. ये जैसे एक होता है ना आपका AFM होता है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप होता है, तो वहाँ इस तरह से वो कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं. हमारे शायद इंस्टीट्यूट में शायद नहीं है, मेरे ख्याल से आईआईटी में है, हम लोगों ने यूज किया था उसको. तो वहाँ ये कंसेप्शन यूज होता है. तो वहाँ जैसे आपको 50 माइक्रोन में 50 माइक्रोन का सरफेस का वेरिएंस अगर देखना है तो आप उसको इस तरह से जो इंस्ट्रूमेंट होता है, नॉट एग्जैक्टली दिस ऑटोकॉलिमेटर, इट इज अ लेजर बेस्ड सिस्टम बेसिकली. तो वो वेरिएशन भी आप उसमें से देख सकते हो. So look at this one very small object of 1 mm in diameter as well as for long measuring ranges that extend up to 15 meter or more. तो look at मतलब 1 mm से लेके 15 मीटर तक आप इसको यूज कर सकते हो. Another marked advantage is that a laser autocollimator can be used for the measurement of non-mirror quality surfaces. मतलब अब इसमें क्या है, जो जितने भी हमने जो ऑटोकॉलिमेटर का जो प्रिंसिपल है, आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए होता है. ठीक है, मतलब आपके पास वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां आप उसको यूज नहीं कर सकते. यू कैन मेक यूज ऑफ फॉर एग्जांपल दिस लेजर बेस्ड ऑटोकॉलिमेटर. In addition, the high intensity of laser beam create a ultra low noise measurements, thereby increasing the accuracy of measurement. TL40, TL160 lasers are popular in the autocollimator. So these are the kind of, for example, this laser that we're using. In as far as this particular क्या कहते हैं उसको
लेजर इज कंसर्न। इसी का एक वर्जन होता है एंगल डेकोर इज अ स्मॉल वेरिएशन ऑफ ए ऑटोकॉलिमेटर दिस इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियली यूज्ड एज ए कंपैरेटर कंपैरेटर दो सी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कंपैरेटर एंड द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करते हैं वी आर मेजरिंग द लेंथ थिकनेस समथिंग जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल दैट क्या था आपका माइक्रोमीटर हो गया वर्नियर कैलिपर हो गया स्केल हो गया कंपैरेटर में हम लोग सिंपली कंपेयर करते विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड वन और वो वेरिएशन आपको दे देगा दैट इज द डेविएशन कितना डेविएट हो रहा है वो so it is just like that particular small version of the autocollimator. This instrument is essentially used as a comparator and measure the change in the angular position of a reflector in a two planes. It has an illuminated scale which receives the light directed through a prism. Light beam carrying the image of the illuminated scale passes through the collimating lens as shown in the figure. तो इस तरह से दिखता है ये लाइट सोर्स है आपका आ गया लाइट सोर्स है ये प्रिज्म है आपका फॉर एग्जांपल दिस इज द इल्यूमिनेटेड स्केल है ये आपका कॉलिमेटिंग लेंस है ये वर्कपीस है जिसका आपको मेजर करना है ये डाटा आपका स्केल है और यहाँ ये आपका आईपीस यहाँ से आप देखोगे ठीक है ना सो यू आर सिंपली कंपेयरिंग इट तो आप वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और नॉट जस्ट लाइक अ कंपैरेटर तो ये इसका इंटरसेक्शन ऑफ दो स्केल होता है ठीक है ना दो स्केल इसमें है मान लो and fall onto reflecting surface of the workpiece after getting reflected from the workpiece it is focused by lens in the field view of eyepiece while doing so the image of illuminated scale would have undergone the rotation of say 90-degree with respect to the optical axis now the light beam pass through the datum scale fixed across the path of light beam as shown in the figure जैसे मैंने आपको बताया when viewed through the eyepiece the reading on the illuminated scale measure angular deviation from one axis at 90-degree to the optical axis and the reading on the fixed datum scale measure the deviation about an axis mutually perpendicular to this ये optical system of an angle decor is enclosed in a tube which is mounted on the adjustable bracket तो ये enclosure होता है it has wide range of application as an angular variation can be directly read through eyepiece of an instrument some typical applications are as below measurement of sloping angle of V block का angle आपको measure करना you can make use of angle decor और यहाँ compare करना है calibration of taper gauges measurement of angle of conical part measurement of angle of work part surface which are simultaneously inclined in two planes determination of precise angular setting for machining operation for example milling a slot at some precise angle to a precisely machined डाटम सर्फेस जैसे कीवे मान लो ठीक है ना उसके लिए कंपैरेटर तो ये ऑल दिस थिंग्स आर फॉर द मेजरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल्स इसके बाद एक पॉइंट आता है कंपैरेटर का यहाँ पे वी आर यूजिंग फॉर एग्जांपल डायल इंडिकेटर एक मैकेनिकल कंपैरेटर होता है जो मैंने इसमें दिखाया था आपको अभी जैसे ये है कहाँ गया हाँ जैसे ये ना इसको डायल गेज बोलते हैं ये वाला तो कंपेरेटर में जैसे कंसेप्ट है वी आर सिंपली कंपेयरिंग एंड वी आर नॉट मेजरिंग तो वो जैसे मैंने बताया वो डेविएशन आपको बता देगा कितना है so we have 5 more minutes just have this slide all measurement require the unknown quantity to be compared with the known quantity called the standard ठीक है ना the measurement is generally made with respect to the time mass and length in each of these cases three elements are involved the unknown जिसको measure करना है the standard and the system for the comparing them in certain devices the standards are separated from the instrument it compares the unknown length with the standard. Such an instrument is known as a comparison measurement and the instrument which provides such a comparison is called as a comparator. तो यहाँ हम लोग क्या करें? We are for example simply using certain devices standard separated from the instrument and it compares the unknown length with the standard. Such an instrument is known as comparison measurement and the instrument which provides such a comparison is called as a comparator. ठीक है?
So what we are doing? We are using, for example, say this unknown quantity that is to be measured, and we have, for example, certain standard that is established over there. Or say simple the system of say comparing simply instead of having the standard. तो वो आपके पास जैसे स्टैंडर्ड मतलब स्केल वगैरह नहीं होगा. वी आर हैविंग फॉर एग्जांपल सर्टेन थिंग लाइक जैसे स्लिप गेजेस वगैरह हम लोग यूज करते हैं. तो यहाँ सिंपली आपको वी आर नॉट मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी जैसे मान 1 मीटर या 2 मीटर एक्सेट्रा या एंगल डिग्री इन दैट. यहाँ सिंपली हम देखेंगे कि जो आप जैसे फ्लैट पे आपको मेजर करनी है तो एक पॉइंट रीडिंग लेंगे, थोड़ा मूव करेंगे उसको दूसरे पॉइंट रीडिंग लेंगे. दोनों जगह आपको मान लो वो जो आपका डायल इंडिकेटर है उसमें मान लो सेम सेम वैल्यू मिलती है फॉर एग्जांपल. तो अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग थिंग कि वो फ्लैट है या नहीं, स्ट्रेट है या नहीं. So it is nothing but the comparator. So here we are simply comparing the unknown with the, for example, say unknown with the help of this particular say comparing device. It gives only dimensional difference in relation to a basic dimension or master setting. Comparators are generally used for linear measurement, and the various comparators currently available basically differ in their methods of amplifying and recording the variations measured. So particularly linear के लिए आपके पास है accuracy of direct measurement depend on the four factor: accuracy of standard, accuracy of scale, least count of the scale, and accuracy of reading of the scale. The last factor is a human element which depends on the efficiency with which the scales are read and accurate interpretation of this reading. तो चार फैक्टर्स में है आपके पास स्टैंडर्ड, एक्यूरेसी ऑफ स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल एंड एक्यूरेसी ऑफ रीडिंग द स्केल. तो वो डिपेंड करता है आपके ऑपरेटर पे. तो लोग दिस इज अ डायरेक्ट मेजरमेंट वर्सेस द कंपैरिजन. यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ डायरेक्ट मेजर कर रहे हैं, डायरेक्ट मेजर करने के बाद हम स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको मतलब ये मान लो आपकी स्टैंडर्ड स्केल है, ये आपने अननोन आपका उसको मेजर करना है जैसे हम लोग करते लेंथ मेजर करने के लिए. तो दिस इज अ डायरेक्ट मेथड हो है, बट यहाँ आपको मेजर नहीं करना है. यहाँ जैसे ये लेंथ है फॉर एग्जांपल, लेंथ कह लीजिए, हाइट कह लीजिए इसको फॉर एग्जांपल, ठीक है ना. या ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ ये आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एक मार्क कर दिया आपने कि इतना होना चाहिए. तो ये आपको जैसे ये डायल इंडिकेटर यूज करेंगे तो अगर ये एक रीडिंग आपको यहाँ मिलेगी, दूसरी यहाँ मिलेगी, फॉर एग्जांपल यहाँ की रीडिंग मान लो 0 है, यहाँ पे आपका 0 आना चाहिए, वो वेरिएशन बता देगा आपको जितना डिफरेंस है. जैसे मान लो 10 माइक्रोन आ गया फॉर एग्जांपल हाइट में डिफरेंस. So this is we are simply comparing with the, for example, that particular standard over here. We are not measuring basically. So it's a comparison. तो आज के लिए इतना ही, ठीक है. Stopping now. कल करते हैं. I'm just marking your attendance. Wait for a minute. कल 1 बजे क्लास. कल 1 बजे क्लास है ना. Okay. Attendance. सर लास्ट लैब जो हमारी कैंसिल हो गई थी उसमें 2 लोग एब्सेंट लग गई है. लैब कब कैंसिल हुई थी? मतलब फ्राइडे को जो हमारी लैब थी वो आपने चेंज करवा दी थी ना, वो लैब हुई नहीं थी फ्राइडे को, तो फिर उसके अंदर सबकी प्रेजेंट अब 2 लोग एब्सेंट लग गई है ग्रुप 2 के. वो देख लेंगे, not to worry about that thing. Remind me whenever the physics classes resumes. Okay. ओके सर. अभी टाइम क्या था? 3 बजे का था ना. डेट आज की है
ओके, पूर्वी, Present, sir. उसके बाद प्रियांशु, प्रियांशु